updates coming in from Uttar Pradesh. Almost over a month since the violence that was witnessed in Sambhal that left at least 4 people dead, a Samajwadi Party delegation is once again headed to the district. Now, the team, including MPs and MLAs led by Mata Prasad Pandey, LOP in UP Assembly, will be meeting the families of those who have been affected because of the violence and offer them a 5 lakh rupee compensation that has been announced by the party. And right before they visit, the Samajwadi Party chief, who will not be a part of this delegation, has taken a dig at the UP Chief Minister Yogi Adityanath over the ongoing Masjid Mandir surveys. He is now demanding that the UP Chief Minister's residence be also be excavated and be surveyed. Why? Listen in as to the question and rather the question being raised by the Samajwadi Party chief himself. मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। Let's get in a word from Pradeep Datta, who's joining us live right now. Pradeep, now right after this violence that has been reported in Sambhal, it has led to a slew of when it comes to anti-encroachment drives, and also when it comes to the ground situation that is also being witnessed when it comes to all of the work that is now being done by teams of ASI. The BJP, in a way that has been reacting, we'll get to Pradeep in just a bit, has cited the leader's comments in the past where he called for questioning the Ramcharitmanas, mocking the Ram Mandir consecration, Nach Gana, Sanatan slander by their allies, to claim that this shows that the opposition has an anti-Hindu mindset. The BJP alleges that the Samajwadi Party is rattled by the excavations unveiling historical truths. अखिलेश यादव और उनका इकोसिस्टम हिंदुओं से इतनी नफरत करता है कि जब सांस्कृतिक धरोहर की सच्चाइयां सामने आ रही है तो उनको चिढ़ मच रही है। कुछ समय पहले इन्होंने बुलडोजर गोरखपुर की तरफ करने की बात कही थी और गोरखनाथ मंदिर की तरफ करने की बात करी थी। आज जब संभल का सच, संभल का सनातनी सच देश की जनता के सामने आ चुका है तो अखिलेश यादव और उनके पूरे इकोसिस्टम को मिर्ची लग रही है। इनको मिर्ची इसीलिए लग रही है क्योंकि इनके मन में हिंदुओं के प्रति नफरत है और ये नहीं चाहते कि सनातन भारत की सच्चाई और हमारा पुराना इतिहास जो देश की जनता के सामने आए वो आते जाए। इनकी सरकारें हुआ करती थी तो ये कार सेवकों पे गोली चलाया करते थे। आज अयोध्या से लेकर संभल तक सनातन भारत का सच देश की जनता के सामने है। उनको ये मालूम नहीं है कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। वो पूरी सृष्टि का एक लिंग स्वरूप है और वो लिंग जो है, आप अखिलेश यादव के घर की भी खुदाई करेंगे, आजम खान के भी घर की खुदाई करेंगे तो भी वो शिवलिंग वहाँ विद्यमान है। तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि शिवलिंग और शिव की महिमा कहाँ कण कण में, जहाँ कहा जाता है ना, एक एक पत्ते में, एक एक कण कण में, एक जमीन के अंदर, पाताल में, पृथ्वी लोक में, आसमान में, हर जगह शिव है, हर जगह शिवलिंग है। शिवलिंग ही विश्व है, विश्व का आकार है और वो सब जगह अखिलेश यादव जी के घर में भी उपलब्ध। कभी कोई हिंदू धर्म को धोखा बोलता है, रामचरितमानस को जलाने की बात करता है, रामचरितमानस को अपमानित करता है। कभी कोई बोलता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, कभी कोई बोलता है द्वारका में नाटक हो रहा है, कोई सनातन समाप्त और सनातन को बीमारी बोलता है, कभी मठाधीश को गालियां दी जाती है। पर क्या जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं अखिलेश यादव, किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे? नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। मतलब कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, हिंदू आस्था को दो गाली क्योंकि लेनी है वोट बैंक की ताली। Well, Pradeep is now connected with us. Pradeep, with the live updates that have now been coming in, you've seen it yourself as far as the teams of the ASI have been part of when it comes to the excavation, and what is being said that all of them that has now been discovered could be over 100 years old. Now, as far as the team is now concerned from Samajwadi Party, it is again attempting to visit Sambhal.
That's really unfortunate that Akhilesh Yadav is trying to look at everything with the communal glasses and he's trying to politicize whole issue. If you look at the excavation process, it's really very important. For the last several years, we have seen that how this ancient past of the Sambal was buried. And that's what actually the government is trying to do. They are trying to restore the cultural heritage. Second, they are trying to reclaim the ancient roots of Sambal. Third, they are trying to revive the Sanatan Sanskriti that was buried because nobody was talking about. So it's not about reviving Sanatan Sanskriti. It is once again trying to promote tourism in that region. Once the footfall of the tourists will be there, it's going to give flip to the economy in that region. And that's not going to benefit any particular community. That's going to benefit each and every section of society. And I don't understand why Akhilesh Yadav is doing so, because he had been involved in that kind of appeasement politics for the last several years, trying to keep one section in good humor while trying to hit out at Sanatan Sanskriti, often trying to target Hinduism. This is not first time. This has become almost a standard operational procedure for Akhilesh Yadav.